नमस्कार। मैं फिर से आज लाइव हूँ अपने सभी अकाउंट्स पे। और आज एक स्पेशल टॉपिक पे मैंने अपना लाइव रखा है और यही सोचा है कि क्योंकि मेरी हमेशा से इस टॉपिक पे रुचि रही है और मैं उसी समाज से आती हूँ जिस समाज से कश्मीरी समुदाय से ही आती हूँ, कश्मीरी पंडित समुदाय से। और मैं भी उसी समाज से हूँ जिस समाज से सरपंच अजय पंडिता जी थे। मैंने ये चर्चा खास इसलिए रखी है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आउटरीच देखा भी और कहीं कहीं जगह पे आउटरीच नहीं भी देखा। तो जो सेलेक्टिव आउटरीच है किसी पर्टिकुलर इशू पे, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक रोज़ मैं किसी ना किसी विषय पे चर्चा कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करूं जो बिल्कुल एक आम कश्मीरी की तरह सोचता है और आम कश्मीरी की तरह बोलता है। तो मेरे साथ इस लाइव में एक ऐसा ही व्यक्ति जुड़ रहा है जो एक कॉमन कश्मीरी पंडित है जिनका नाम है सतीश महालदार जी। सतीश जी मेरे साथ जुड़ने ही वाले हैं। सतीश जी, इफ़ यू कैन सेंड मी द रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन ऐड यू इन माई लाइव, प्लीज़ सेंड मी द रिक्वेस्ट। तो मैं क्योंकि रोज़ सुबह जब से ये घटना घटी है घाटी में, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और मैंने सतीश जी को देखा कि वो बहुत वोकल थे इस चीज़ पे और बहुत सेंटिमेंटल भी थे। मैंने अजय पंडिता जी की बेटी को भी बहुत वोकल होते हुए देखा और उसके विचारों को भी देखा। तो मैं सबसे पहले सतीश जी को अपने लाइफ में जोड़ना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि अ, उनके इस पे क्या विचार हैं। एक कॉमन कश्मीरी हिंदू इस इशू को कैसे देखता है, पॉलिटिकली देखता है, सोशली देखता है, कैसे देखता है। तो मैं पहले उनको ऐड कर लेती हूँ अपने लाइव में और वो ऐड होने वाले हैं। और उसके बाद हम दोनों जो हैं इस टॉपिक पे एज अ कॉमन कश्मीरी पंडित हम लोग चर्चा करेंगे। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैम। मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है अभी। वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे सबसे पहले करें तो उसके बाद देन वी कैन फर्दर वी कैन गो फॉर अ डिस्कशन। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? से योर इंट्रोडक्शन। आपको वॉइस आ रही है सर? आई एम myself. I am myself. I can hear you. I can hear you. I can hear you. That. I'm a I'm for a for systems, systems, and I'm also the and I'm managing also the managing director also the for. managing director for. आपका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है। ठीक है सर, गो अहेड। गो अहेड। वी आर लाइव सर। Okay. 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 So I, Okay. So I Pandit, I'm working for a Pandit, I'm company. working for a company. Thank you. Thank you. Yes, sir. I I by the name of by the name of for the the four. सर यू आर आपका वॉइस नहीं क्लियर आ रहा है मुझे। एक बार ऑडियो चेक कर दीजिए। ज्वाइन ज्वाइन बैक अगेन।
सो एनीवेज मतलब अभी नेटवर्क का इशू मेरे साथ भी आ रहा था और उनके साथ भी आ रहा है। तो वो बेसिकली एक सिंपल प्रोफेशनल है, लेकिन एक ऐसे समाज से आते हैं जिन्होंने वाकई में जिनको जब हम असहिष्णुता और सहिष्णुता यानी कि इनटॉलरेंस और टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कश्मीरी हिंदुओं का समाज एक ऐसा है जो कि बहुत टॉलरेंट रहा है। और मैं क्योंकि खुद पंडित हूँ और पंडित के लिए वॉइस भी हूँ, बहुत खुल के बात करती हूँ इस टॉपिक पे। और यही सोचने की ज़रूरत थी मुझे, इसी पे ही मंथन करने की इच्छा थी कि मैं किसी ऐसे कश्मीरी पंडित को बुलाऊं जो वॉइस भी है और जो मेरे साथ जुड़े। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं ये लाइव केवल और केवल अजय पंडिता जी का इशू लेके नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कश्मीर में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और कश्मीरी पंडित्स का फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है वो भी मुझे एक कॉमन कश्मीरी पंडित से पूछना है, क्योंकि कई बार उनसे कहा जाता है कि आप लोग वापस नहीं जाएंगे। वो भी खुद सोचते हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है। और इसको दोबारा से मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देती हूँ एक बारी, तो जिससे कि वो खुद दोबारा से ऐड हो जाए लाइव में। आजकल कनेक्टिविटी का इश्यूज जो है वो बार बार इसलिए भी होता है क्योंकि सर इज इट ओके नाउ? Yeah, it's fine. Yeah, it's fine. Yeah, It's it's fine. Now it's Yeah, fine. it's fine. Yes. The Anyways, more of the if you yeah. can The give more of me the- your yeah. introduction again so that people who are watching can know you. And Okay, I fine. have given your Okay, fine. introduction as a common Kashmiri Hindu. Okay. See, Okay. professionally, I See, am working for professionally, a I am company. working for a company. I am working for a company as a CEO of the as Sun a CEO of Systems, the Sun Systems, Okay. and I'm also the and I'm director for also the Sigma director for Overseas Sigma Limited. Overseas Limited. Oh, great. Beyond that, I'm also Beyond that, I am also the managing editor for Morning managing Kashmir. editor for Morning Kashmir. Mm-hmm. So this is a little bit So brief this is a about little my bit brief our about professionally. our professionally. Okay. Yes, And so I'm a proud Yes, Kashmiri I am a Pandit. proud Kashmiri Pandit. Great. So am I. So let's start with the topic. मैंने ये लाइव जैसा कि आपसे पहले बात की थी आपको लाइव में बुलाने से पहले कि इसका पर्पस यही था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अजय जी की बात ही ना करें, बट मुझे ये सेम जो इशू है वो फिर से हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रही है। तो मैं क्योंकि मेरा बर्थ जो है वो 90 में हुआ है और मैंने कभी कश्मीर को इतना प्रॉपर्ली देखा नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉमन कश्मीरी से ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। मतलब जब हम कश्मीर की बात करते हैं आज की डेट में, तो हम हमेशा या तो हम सेक्युलर हो जाते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, कश्मीरी हिंदुओं की एक्सेप्टेंस अभी भी है, या फिर हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन इशू जो है वो वहीं का वही नज़र आता है। बहुत सारी डिबेट्स होती हैं टीवी पे, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि मैं इसको एक सोशल इशू की तरह देखूं, एक पॉलिटिकल इशू की तरह देखूं, या कैसे देखूं। मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? एक कॉमन कश्मीरी क्या सोचता है जब ऐसी घटनाएं अभी भी होती है? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगा कि Ajay Bharti's daughter has inspired all has Kashmiri inspired all Pandits Kashmiri Pandits Yes, true. to Kashmir Chalo. Kashmir Chalo. हाँ, वो हमारी कर्म वो भूमि है, हमारी जन्म कर्म भूमि भूमि है, है, जन्म भूमि है, and that is our and identity. that is our identity. yes. कश्मीर belongs to us कश्मीर belongs to और us कश्मीर हमारा और है। कश्मीर हमारा है। उन्होंने हमें ये भी याद कराया कि जो उनके पिताजी थे वो मातृभूमि की सेवा कर रहे थे, अपने लोगों की वहां पर सेवा कर रहे थे, जो एक हर कश्मीरी को करना चाहिए। Yes. So she has inspired us, and that is the मार्गदर्शन। If I say that, नया युग, नई सोच और नए विचार। That's in the modern digital world. Meantime, she has challenged the Modi regime
When I say she is challenged, because it was the dream it was the dream of Modi regime Modi and regime BJP to and have the BJP to have the governance at the governance ground at the root ground level. root level. Because since Because since inception till date, inception till date, the sarpanch the and sarpanch and punches were punches selected, were not elected. selected, not elected. So this was the So first this time was the when first time when sarpanches were elected, sarpanches were elected, Yes. and it was a and it complete was a challenge to complete the challenge to the politics which was politics since which was 1947 since till date. 1947 till date. So we see So it we is see it is indirectly the non-acceptance non-acceptance of the Modi's of the thought process Modi's within the thought Jammu and process Kashmir within Valley. Jammu and Kashmir Valley. Right. Getting down to the Getting point, down to the point, how it will how affect, it or will we see affect, there or was a we thought see process there of was the a thought national process of the politics that they national will give the politics that they emergence will of the give the new emergence leadership, of the new leadership. and which And Modi ji, it which in fact Modi it ji, in happened, fact but it it was a happened, but fraud. it was a fraud. क्योंकि सारे क्योंकि सरपंच और सारे पंच नहीं इलेक्ट सरपंच हुए, और बिकॉज पंच नहीं सबने इलेक्ट हुए, बाइकआउट बिकॉज किया सबने था. बाइकआउट किया था. जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है मेन उन्होंने भी स्ट्रीम पॉलिटिक्स बाइकआउट है किया था, उन्होंने बट भी इसमें बाइकआउट कुछ किया ही था, लोग बट इसमें उसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे उसमें थे. पार्टिसिपेट कर रहे थे. और अभी भी कम और से कम अभी भी रफली कम से कम 10,000 के रफली करीब 10,000 के पंच सरपंच नहीं पंच सरपंच इलेक्ट नहीं हुए हैं. नहीं हुए हैं. उसकी जो प्रक्रिया उसकी कंप्लीट जो होनी है वो प्रक्रिया अभी नहीं कंप्लीट होनी हुई है है. वो अभी नहीं हुई है. लुकिंग टू दैट, लुकिंग फ्रॉम टू दैट दैट, वेरी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वेरी जो हम पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस जो की हम बात करें या गवर्नेंस की बात डेमोक्रेटिक करें या प्रोसेस की बात डेमोक्रेटिक करें, इट प्रोसेस हैज की बात करें, चैलेंज्ड द इट हैज थॉट प्रोसेस चैलेंज्ड द ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ बीजेपी एंड मोदी बीजेपी गवर्नेंस. एंड मोदी गवर्नेंस. सर बट एक और चीज़ है, मैं Yeah. क्योंकि ये Yeah. एक आपने पॉलिटिकल एंगल दिया है इसको, जिसे मैं भी कहीं ना कहीं तक एक्सेप्ट करती हूँ कि ये इशू है. बट अगर मैं सोशल एंगल से इस चीज़ को देखूँ तो वैसे भी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस वहाँ के कॉमन लोगों में भी बहुत कम दिखती है. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा बहुत सुनती हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदूज़ वापस आए, वहाँ पे रहे. वो जैसे कश्मीरी में तिमचना वनान की कश्मीर का जो मतलब जो एलिगेंस थी वो आप ही लोगों से थी, जो शोभा बढ़ती थी कश्मीर की वो आप ही लोगों से थी. अगर ऐसा थॉट है तो मुझे एक भी ऐसा कॉमन कश्मीरी मुस्लिम फैमिली नहीं दिखती है जो कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पे पूरी तरह से एक्सेप्ट करे. मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक फ्लॉ नज़र आता है. वो चाहे मिलके रह रहे हो या अच्छे से रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो द्वेष की भावना जो होती है, जैसे हिंदी में कहते हैं, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, जो मुझे अभी भी नज़र आता है. आप इसको कैसे लेते हैं कि अगर वापस जाने का डिसाइड करते हैं, इफ़ यू विश टू गो बैक टू कश्मीर, do you think that this Okay. common society, the common Kashmiri Muslim will accept you as a Kashmiri Hindu? Is it easy for them? Okay, I will go with the basics. Okay, I will go with the basics. Yes. See, we all, whether it was a Kashmiri Whether it was a Kashmiri Pandit or it was a Hindu or government agencies, they had been blaming they had been blaming that it was the that Hurriyat it was the Hurriyat who was responsible for the genocide of the responsible for Kashmiri the Pandits. genocide of the Kashmiri Pandits. Right? Here I want to Here I draw want to draw up your attention one by one. one by one. First of all, I will say democide led to genocide. led to genocide. When I say democide, the state government, central government was silent when it all happened. Yes. True. Now, because it is a sentimental way to blame on the basis of the religion, that's okay. It suits to me. It suits to me. But at the same time, if I look from the different prism, the state government was silent and the Pandits could have been placed in the barracks. Bagh was there, whether it's a Kupwara is there, Baramulla is there, or any other, even state headquarters were there. There was no formal announcement that, you kindly protect the Kashmiri Pandits and put them, in the barracks
we need to save them for some period of time, give them the shelter or whatever it is. Now see, in 2014, 2015, there were the floods, right? Army command, GOC command of its own gave up a command, and he made to the army to rush and save the people. He didn't receive the instructions from the government of India, from the Prime Minister of India, or from the President of India. So I blame, it's very clearly the failure, a big slap, a big black day on the date of state government and the central government, because both kept silent. Now, getting down to the point, yes, there were fundamentalist Islamist jihadis who selective other people who came and who killed our people, and it was a targeted killing to create the fear psychosis. And we were thrown out of that Kashmir Valley. There's no doubt about it. But at the same time, it was the same Hurriyat, Jamia Masjid, Mirwais Umar Farooq, who repeatedly in 2018, 2019, he said, they're our brothers, Kashmiri Pandit are our brothers. It's a humanitarian issue. We need to rehabilitate them within the Kashmir with dignity and honor, which government of India has not said till date. It was on the persuasion of Hurriyat, where mainstream politicians failed. They were doing this lip services in corridors they used to talk about, but it was only the Hurriyat in their Jama masjids. They announced it openly that we need to rehabilitate Kashmiri Pandits. It's a humanitarian issues. They're our brothers. Now, getting down to the point, as of today, again, it is the responsibility, because it's a democide. It was a big slap on the democracy process and the constitution. It's the government of India who has to ensure the Kashmiri Pandits are rehabilitated back to the Kashmiri Valley. Now, getting down to the point, the social fabric. Since majority in population is Muslim, it is the onus and the responsibility of the majority in population to protect the rights, fundamental rights of the Kashmiri Pandits. In this, these were also, if I remember technically, it was 1953 and in 1931, they were repeatedly agreed upon by the leaders of the majority in population, Muslims in Kashmir, that we will always come and protect the rights of the minorities. But due to their political reasons or their selfish or greed, they always ignored these pledges. But nobody can ignore, nobody can give the social security. If I go to the Bangalore, if I go to Mumbai, if I go to Hong Kong, I go to even the Moscow, we have an office. The locals give us that protection. It's not the government who gives us the protection. It's the social people who has to give us the protection. So it's the majority population who has to give the protection to the minorities, whether it is the Kashmiri Pandits, it's the Sikhs, or any other people. Another thing I want to add here is that if I see Kashmiri Hindu community in an overall aspect, I see them very loud on all the media platforms. But what I don't see, I'm talking here as a Kashmiri youth, not as a journalist. What I don't see in them is the real enthusiasm and a real compassion towards Kashmir, which is still missing. I don't blame everybody over there, but somehow I see that more fighting, more arguments, more debates, more discussions, but on grounds, what exactly we have been doing, I have no idea. Half of the people, what I believe, there is a problem. Why I still think that government is still not taking the community seriously. There is a problem that we have made multiple organizations, multiple committees, and everybody has their own way of working. And nobody has our community. Do you think our community is still lacking a collective thought towards going back to Kashmir or towards seeking some solution from government? Do you think there is a First of all, we are lacking an collective thought? First of all, I just want to share with you. The basic is right from the inception since 1930. I'm taking the reference as a 1930.
The Kashmiri Pandit was never the part of the politics. No doubt there had been some politicians, but they were all selected. They were never elected. Yes. Number two, getting down, I'm thankful to all associations, all activists, all leaders who has directly, indirectly tried to, through the cultural means, connect the community. From your perspective, the number is big, but I say it should increase more because we want more close bonding. Because our whole entire community, which was a close-knit community, has been scattered all across the world. So even though 10 people are having the association, 5 people are having, it's good because some way, directly, indirectly, they're connected because we are homeless, we are roofless, we are addressless. So it's very important to get connected with the people. And this is the one, one of the ways to look to the Satyagraha to identify yourself. Now, yes, you are right, because most of them are the social organizations. There is social activities, cultural activities, but they do lack in terms of the political dominance to create their presence in the political lobbies. They have failed. Yes, I do agree to it. No, I'm not saying that they have failed. I'm saying that I see a conflict among them. Because if there are, it's because of ways of working. Because somebody is doing for something for Sharda Trust. The work is good, everything is good. But that particular individual, he has to be associated with somebody in Pakistan, and then वहाँ से वो connect करते हैं, then he takes all the updates from there. तो कुछ पंडित्स आके ना उनको काउंटर इस बात पे करते हैं कि आप पाकिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो. आई एम सेइंग द वे ऑफ वर्क, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है और सबका वे ऑफ वर्क डिफरेंट हो जाता है, सबकी डिमांड्स अलग है, सबके इश्यूज अलग है. तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हम लोग डिटेरियोटेड से डिस्ट्रैक्टेड से लिखते हैं. See, Surabhi, when we talk about, that's what the reason I'm talking about, the most of the organization and the leadership, I salute them at any given point of time. But you need to understand, when we look to the economics, because it's about the politics, is all about the economics. The politics is about the skill, which we are lacking and failing, because our more thrust is, we consider myself to be more skilled in the social cultural activities rather than in the the economic the aspect which needs to be looked at. I will give a small example. Yes. Since 30 years, nobody has talked about the budget in terms of the Kashmiri Pandits. Yes. Recently, Government of India has released 1,20 some crores for J&K budget. Right? But no organization has that economical sense to counter the government what is for. Yes. Whereas the thrust is more on enhancement of relief and on the health scheme or maybe some more candies. The fact remains, I am a stakeholder. If I claim Pan Kashmir, Sampurn Kashmir, homeland, this land, then I need to talk about my stake, my share of my budget, my welfare of my community. Yes. Which we have never represented in those terms. We are talking about we want a piece of land, but we have not been in a position to create the vision where we can have a stake in terms of the economy of 5%, 3% economy stake in the entire revenue of the J&K. So these are the key areas to look into. Emotional, sentimental part is one. Then we have to drive the entire community in terms of the economics. My community is right now struggling. There are a lot of people, see, most of the people of their own strength, they have gone into different work domain areas. They are working around the globe for their survival fittest. But we have not, we are talking about the separate land. We are talking, that's a very noble cause. That's fine. I respect and I do that. But we have not been in a position to come up with the economics and the vision document in terms of how we are going to raise the economics. Because in the global world, it's all about the money. It's about the land. Yes. So we are not talking about those areas.
We are talking about just a representation group of 10 seniors, 20 seniors. We want a return with dignified dignity, honor. What is that? Nobody knows. We want return and rehabilitation. What do you want? Nobody knows. Come on, where we are. Yes. And another thing, sir, which I want to really raise here is that I have seen a lot of videos after this Ajay Pandita case, and Right. her daughter has been very vocal, very confident, and she has a stand that we are coming back. This is what her slogan is, that we are Yes. not scared, we are coming back. And she has been staying in Kashmir with her father. Her father has been a very, the way she has spoken on television, that her father has been very soft with every other community. So when I see her as a young Kashmiri Hindu speaking like this, uh, I am amazed because I see her as there is a new birth of a Kashmiri Pandit. What I see, she's a newborn baby of ours. So how do you take her thought? What do you think about her? And उस एक चीज है which I also mentioned in my blog. मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉन्वर्जेशन मैंने आपको बताया था जब हम लोग फोन पे भी बात कर रहे थे, that her father told her कि I have nothing to do with the religion, but individuals का अपना एक थॉट होता है जिसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं कि वो कैसे और किस हद तक सोचता है. बट उसका थॉट और उसके फादर का थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे शीन में एक एग्रेशन दिखाई देता है और मेरे पास एक आइडिया है विच आई वुड शेयर आफ्टर दिस लाइव और इन द एंड. हाउ डू यू सी हर एंड डू यू अप्रिशिएट हर थॉट्स, and do you think that we should give her good platforms to speak about us? So what are your aspects and observations regarding her? मैं ये कहूँगा कि मैं इनके माता पिता को सबसे पहले सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो अपने बच्चे में इतनी एम्पावरमेंट दी है कि एक वो विजन डिफाइन कर सकते हैं. टिपिकली इन ट्रेडिशनली यहाँ पर होता है कि आलू के 2 किलो भी शादीशुदा आदमी को जाना होता है तो 4 बारी पीछे से टोकते हैं कि काला वाला नहीं लेना, इसी दुकान से लेना. दुकान वाले को बोल देना मैंने भेजा है इसलिए नहीं भेजा है. So I really, I'm inspired, and it's a learning for most of the parents how they should look to their daughters and their kids. शादीशुदा हुए बच्चों को भी जिनके उम्र 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, उनके माँ बाप उनको बोलते हैं कि बेटा नहीं, इस दुकान से ये लाल वाली तैली लाना. अरे कम ऑन, इज ग्रोन अप, इसको करने तो दो डिसीजन. So that's really it's a request to my whole community that please allow that, please raise up your children like Sheen. She has really inspired all of us, and we are proud of that. We want our daughters to be like that Shernis. Now, getting down to the basics of it, see, there is a conflict. Now, you have recently taken up the statement from our Home Minister MOS, Mr. Girish Reddy, has come up with a statement few months back. 50,000 करोड़ मंदिरों को खोलने के लिए लगाया जाएगा. अरे बाबा, बंदे को जब आदमी नहीं रहेगा तो उधर किसको मंदिर बनाने का है? आदमी रहेगा तभी ना मंदिर रहेगा. So where is that temple? Now that's first point. I'm coming to that. Number one. Number two, the community is divided up. No, we want, they are good for sloganeering at Jantar Mantar or in Jewel Chowk or any part of the country. अरे हमारे मंदिर का बिल पास करो. अरे आपने पन्नू कश्मीर करना है या संपूर्ण कश्मीर करना है या आपने जगत कल्याण करना है, जो भी करना है, जब आपने सेपरेट लैंड की बात कर रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट को क्यों इंसिस्ट कर रहे हो मंदिर रिपेयर कराने के लिए? फॉर व्हाट यू आर इंसिस्टिंग द कम्युनिटी टेम्पल बिल जी पास होनी चाहिए. अगर आपने कश्मीर को कह दिया मुझे छोड़ना है तो जंतर मंतर पे आप क्यों कहते हो कि मुझे कश्मीर इज माई प्लेस? पहले कन्फ्लिक्ट देखो आप खुद में ही. मतलब हम अपने आप को ही कैसे चीट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज. अगर मुझे जाना नहीं है
तो गवर्नमेंट को क्यों मैं कहता हूं कि आप जाके वहां पर मंदिर रिपेयर कराइए? अगर मैं सेपरेट लैंड मांग रहा हूं तो मैं क्यों गवर्नमेंट को कहता हूं कि भाई वहां पर मंदिरों को रिपेयर करवाइए? Just think about it. That's something which is the every community member should know to and understand it. Now, getting down to the point, what's my suggestion into it? I will come to that. What Sheen? It's correlated to Sheen's inspiration and thought process, and I'm coming to that. मैं ये कहूंगा कि आई एम नॉट डिस्काउंटिंग एनीबडी. मैं ये कहूंगा चाहे पन कश्मीर वाले थे या कोई भी संस्था था, आई अप्रिशिएट देम, आई सैल्यूट देम, एंड मैं हर बंदे को धन्यवाद देता हूं. कोई भी लीडर है, कोई भी एसोसिएशन जो भी काम किया, अच्छा किया. गलतियां होती हैं तभी काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो गलतियां कहां से होंगी. बट अभी जो गवर्नमेंट ने डोमिसाइल प्रोसेस किया है फॉर माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट्स के लिए, एक देखिए हमारे पास हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा एसोसिएशंस को लेके. कोई कहता 5 लाख, कोई कहता 10 लाख, कोई कहता 15 लाख, कोई कहता 7 लाख. गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपको तो 64,000 ही है. See, I claim to be myself the leader, but I don't know how many Kashmir Pandits are there. Now, this is a golden opportunity कि we should enroll and ensure those migrants, non-migrants are there. We should ensure that everybody is enrolled. Yes. What will happen in that case if government, let us suppose we are 2 lakh people or 3 lakh. I'm taking a hypothetical situation as 2 lakh. Now, since पिछले 30 साल से 1990 से लेके अभी तक एमएलए वहां पर बनता है 5,000 में, 8,000 में, 3,000 में. मेंबर पार्लियामेंट फारूकुल्लाह जीते हैं 58,000 वोट से. अगर हमारा आंकड़ा 2 लाख भी हो जाता है, जो हमारे लीडर्स क्लेम करते हैं 10 लाख 25 लाख, पता नहीं क्या क्या फिगर्स देते हैं. आई नो फ्रॉम वेयर दे कम अप, बिकॉज आई हैव अ फिगर इन 1931 the total population of the Kashmiri Pandits was 69,000 souls, right? If I look to the figure, it comes tentatively 2 lakhs. But I say on the higher side, okay, it has increased the population. Maybe it has gone to 3 lakhs or 4 lakhs or 5 lakhs. But I'm taking still 1931 as a figure, as a base, 2 lakhs people. अगर वो भी आते हैं, then we will have minimum of 3 to 4 or 5 MLAs. That will give the political empowerment to the community जो पिछले 100 साल से कम्युनिटी को नहीं मिली है. अगर आपके 4 क्षेत्र में भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारत ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डिफाइन करती है रोल, और आप जो इलेक्शन होने हैं कभी भी हाल फिलहाल में होंगे, और अगर जितनी जल्दी हम अपना डोमिसाइल प्रोसेस करते हैं तो हमारे को एक क्लियर व्यू है कि दैट वी कैन हैव 3, 4, 5 एमएलएस विद इन द कम्युनिटी. ना हमको किसी मेंबर पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, ना हमारे को किसी एमएलए के पीछे पास जाना पड़ेगा, ना हमने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के पास. हमारे ओन रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पेंडिंग मसले हैं, चाहे वो मैं कहूँगा पन कश्मीर वालों को होमलैंड मांगना है वो होमलैंड मांगे, किसी को होल कश्मीर मांगना है वो होल कश्मीर मांग ले, किसी को खालिस्तान मांगना है तो वो खालिस्तान मांग लेगा, किसी को जो हमारे कम्युनिटी का एक और इशू था टेम्पर बिल जो आज तक नहीं हुई, वो सबोटाज किसने की, आई डोंट वांट टू पुट दैट ऑन द रिकॉर्ड हियर, बट वो भी टेम्पल बिल के लिए भी खुद ही कम्युनिटी के लोग इसको परसुएड कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड के दैट ये हो जाए. जो कम्युनिटी के विद इन द मसाइल हैं, चाहे वो जॉब को लेके है, एजुकेशन को लेके है, रिजर्वेशन को लेके, दैट ऑल कुड बी एड्रेस्ड. सो इट इज द राइट टाइम. The whole community as on today should look forward to get into this domicile process and participate in coming elections and elect 3 to 4 member legislatures from there within the community. That's what I suggest as on today's the current position is concerned. Now, why I said it is connected with the Sheen, I'm inspired that, if you look Americans, if you look to the worldwide, anybody, वो हर बंदा तिरंगे के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए मरता है. Look to the Singapore, look to the Israel. We talk about Israel in our lot of discussions, but we don't implement ourselves in that. Actually, what they do. Look to the Americans. वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने झंडे के लिए मरते हैं. तो अगर ये मेरे पूर्वजों की जगह है, अपनी मातृभूमि है मेरी, मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को कश्मीर पंडित, तो मेरा फर्ज पहले है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को वहां पर जाऊं, सेवा करूं अपनी मातृभूमि के लिए. बलिदान के लिए कोई नहीं कहेगा मैं, दैट विल बी द वर्स्ट थिंग टू टॉक अबाउट, बट एटलीस्ट देयर इज नो हार्म अबाउट. एटलीस्ट ये तो कहेंगे ना कि भाई मरना तो हर किसी को है कहीं ना कहीं पे, क्यों ना अपनी मातृभूमि पे ही सही. यस, अगेन वंस अगेन आई विल से दैट मैं धन्यवाद दूंगा हर माँ बाप को, मैं हर कम्युनिटी के माँ बाप को यही करूंगा कि शीन जैसी बेटी को तैयार करो, पैदा करो, इनको एम्पावर करो. दे आर द फ्यूचर. इनको ये मत टोको कि आलू कहां से लाने और किस रंग के लाने. लेट देम डिसाइड
what is good for them, and put them in a don't put them in कि आपका व्यवहार किसी A से अच्छा नहीं है तो आप उसके ऊपर मतलब I will give you a small example which I just want to put it up. मासी का लड़का अच्छा है मगर चाचे का लड़का बुरा है. Please don't tease them. Be proud of Sheen. Sheen is our today's vision. नया युग की धारणा है, हमारी विचारधारा. Let's follow her. She's very wonderful daughter of ours. Let's follow her. That's my thought process today. इवन क्योंकि मैं खुद जर्नलिज्म से हूँ, बट जब मेरे को भी कभी ये सब बताया नहीं गया था, बिकॉज आई एम माई सेल्फ 90 born. I haven't seen Kashmir so closely. I have been there lot many times, but as a tourist, I will say, I'll use the word tourist because we used to go there, to stay somewhere in our relatives' house, and then we used to roam around. We used to go to Tulmul, and but the last visit, which I will share it with you, because आपने शीन का thought को बहुत inspiring कहा है. मैंने इसलिए भी ये लाइव रखा क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उस बच्ची के थॉट से बहुत पैरेलल हूँ और उसके एग्रेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज हमारे जैसे यूथ के लिए जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है और जो एक्चुअली उस अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, उनको ऐसे बच्चे ना बहुत अवेयर करते हैं और बहुत ज्यादा जगा कर रखते हैं कि नहीं यार, अगर हमें उनको देख के, शीन को देख के मुझे लगा कि if she has so much of courage, then why should I stay back and say that I don't want to go and then I will never plan to go back. But sir, there is again one thing which is lacking. If someday I'm giving you some imaginary thought, I don't think it will happen. The day will come that this will happen. A whole community decides collectively that we want to go back. What are the issues and what are the things which we will be requiring there to stay? मतलब आपको अगर वापस जाना हो या पूरी कम्युनिटी को वापस जाना हो, तो हम लोगों को सबसे पहले डिमांड्स, मैं 3 डिमांड्स आपको बोलूंगी कि क्या करने चाहिए कि हम वहां पे रहे और सुरक्षित रहे, विद सिक्योरिटी रहे. मैं फिर बार बार कहूंगा, देखिए, since I travel outside the country, Russia is a very, we all know how Russia is. We roam around the interiors of the Russia. जो हमारी सोशल सिक्योरिटी वहां पर भी रहती है, तो वहाँ के लोकल लोग ही रहते हैं. तो हमारे से, हालांकि हमारे वहाँ पर अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज भी हैं, हमारे गनमैन्स हैं, बट उसके बावजूद भी हम सोशल सिक्योरिटी जो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है तो उनसे ही लेते हैं. बिकॉज रोजमर्रा के काम करने हैं, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, बस हायर करनी, एयरपोर्ट जाना है, ट्रेन्स में जाना है. Because it's not possible that everywhere we can carry out the then families around, the friends are around, we can keep the security guards everywhere. So the social security is the first thing. No doubt, it's the onus and responsibility of the majority population. Number one. Number two, so far I see a very good thought process जो मोदी जी और अमित शाह जी ने अभी कहा. In spite of scattered whole of the Kashmir Valley, आप चाहे 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रहिए, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में रहिए, तो उसमें क्या है कि 20,000, 25,000, 30,000 लोग इकट्ठे रहेंगे, 10,000 भी रहेंगे, चलो मैं कहता एक 5,000 भी लोग रहेंगे, तो इट्स अ गुड नंबर, विच आर इकट्ठे रह रहे हैं. सो दैट विल बी इटसेल्फ ए बिग सिक्योरिटी. 5,000 इज अ बिग नंबर. सो वो एक बेसिक है. नाउ गेटिंग डाउन टू कि हमें क्या चाहिए. देखिए, देयर इज नो एंड टू द लिस्ट, राइट फ्रॉम द जॉब्स टू एजुकेशन टू मनी. Yes. To so many things. So in fact, even in the budget recently, I have demanded about 3 lakh crores from the government of India to get rehabilitated within the Kashmir. I have asked for about 800 acres of the land to set up the industrial zones for the community entrepreneurs who are across the world, who are doing the business within the country. What stops them not to have? To give us the land for that. Help us in all other schemes which are state-sponsored schemes which they are looking forward to. Why don't they introduce us? We have got a wonderful talented people within the community. They should equally give us the participation.
looking to the sports. Our daughters, sons, they're doing well in the sports also. Why didn't they invite us? So there is no end to the list. But primarily, yes, the place is very important for us. Followed for that, we should have an industrial area where we can have a wholesome economy. Our people are there. Somebody wants to run a school, somebody wants to run up a hospital, somebody wants to, and in JNK has not been any development. There's going to be the opportunity for our own people to look into these areas. So nothing's going to stop us for that. I don't see any problem in that. Looking to the security point of view, again and again, it is a majority in population who has to look into it. And now I don't see there is going to be much of the problem because West Pakistani refugees, again, from your point of discussion, I should not quote up, but I'm still quoting it up. It's again a slap, a betrayal, I will say a betrayal. The West Pakistani refugees has been rehabilitated, they have been given the land, they have been given the money. But we original Aborigines are still outside. And there is no policy with the government of India. Yes. One. Number two, the BJP has been blaming to us that you people don't vote. Now, I will give you my example. Within my family, we are 15 members of the family. My father has got a receipt from the electoral department, Srinagar, Jawaharnagar. But my father's name, my mother's name, nobody's name is in the electoral list. Like that, 2 lakh people are there whose name is not in the electoral list. Whom should we vote? Where are we to vote? Now, that was the reason the previous day I have protested it. The delimitation should not take up the place on the basis of 2011 census. It should happen on the basis of 2021 census. Because it's very equally important for me where you are going to put me. If you are demarcating, adding the constituency, in what constituencies you are going to put me, where you are going to put up the Kashmiri Pandits. Who you want to put some Kashmiri Pandits in the Jammu and somebody in the Kashmir? Similar thought which I was telling you that I will share in this live, which I got an idea for the girl who has been so vocal, and she is not vocal because of her father only. वो ओवरऑल एक कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव देती है टेलीविजन पे आके कि हम लोग जाएंगे, तो शी हैज दैट थॉट इन हर माइंड दैट वी ऑल शुड गो बैक. तो ये थॉट जो है मेरे हिसाब से नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव हर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन कश्मीर, whether it is her joining an army or somewhere, they should actually give her some opportunity to basically for her own growth, because she has so much of enthusiasm, and they should actually utilize that energy of her in something which is good for country and good for Kashmir. आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इस बच्ची को मिलनी चाहिए? Because she has मैं कहता हूं, मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं. कारण ये है कि मैं सच कह रहा हूं, चाहे मेरे पिताजी थे, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे एल्डर्स हैं, because of their lack of their leadership, my fundamental rights has been denied, and nobody has talked about that voice. My constitutional rights has been denied. Nobody has talked about those things. Nobody has fought for those things. 215 people has been killed as per the list. Maybe there had been hundreds of people had been killed. Not a single leader has gone and followed those crimes, those cases. And those were not only killings. We should actually use word brutal for that. That was brutality. The brutal killings. It is a responsibility. Yeah, it's a responsibility me of as an association or a leader to follow up those cases. But because of my coward act, I am not followed those cases. I say sincerely, you are talking about the what energy is. I will say that we all should follow our daughter, because she has inspired. She has got a vision what a person as a leader should have. How to reclaim the land, how to reclaim the rights. What most of us has failed. Exactly. Even sir, because I come almost from the same generation
as Yeah. I have said before also that I haven't seen anything of Kashmir. So Right. culture is what I have seen in my own home, what my grandfather used to do, what my grandmother used to do. So Right. I have very sensitive towards culture. Even when I was getting married, it was a particular tradition which I kept in front of my parents that no ritual you will not miss a single ritual of Kashmiri Pandits. Whatever is happening, whatever has been happening in the marriages, and I was so keen that I forced them कि यार वो catering system मत रखो जो नीचे बैठ के हम लोग खिलाते थे लोगों को, let's do that again. Wonderful. But हालांकि they were so stressed that I said कि चलो ठीक है मतलब let's not put that much of stress on them. But Right. For people like me or my generation or people who are younger than me, kids like Sheen and everybody, we should actually get sensitive towards our culture. क्योंकि Right. अगर आप संस्कृति जिंदा नहीं है, हम लोगों का जो स्प्रेड है और हमने जिस तरीके से वहाँ पे आई विल गिव अ थम्स अप टू एवरी एंड ईच एंड कश्मीरी पंडित फैमिली दैट they have somehow kept their culture alive. But somewhere I have seen that it has been dying in marriages and in other pujas. People are leaving all these things. So from this live, I would request the entire community that at least कि यार अगर हम कश्मीर जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो कश्मीरियत है उसको अपने घरों में जगाकर इसलिए जरूरी है रखना कि हमें फिर से शीन जैसे बच्चे मिले, हर जनरेशन उस तरह से सोचे और उस तरह से समझे. तो देखिए एक इसमें मैंने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रोक रहा हूँ. एक शिवरात्रि में हमारी एक शिवरात्रि जो है we had taken up no doubt we do a cosmetic the most of our rituals outside the Kashmir nowadays, it's more about the cosmetic rituals. I will give you a small example. When we talk about the Shivratri, what is the essence of the Shivratri? We talk about the marriage nowadays. If you'll ask any young boy or my son or somebody, anybody, ये तो शिव और पार्वती की शादी है, right? But if you look from the concept of the Shivratri, it's a Bhairava, it's a tantra. It used to protect our entire generation and families. Yes. We wrongly, used it. How it was. Nobody is responsible. We are ourselves. People took it as zar gundun. Here is pad guys zar gundun. So they took it as I'm doing sharab achun ke bhagwan ka sanchu khosh. But actually, if you look to this ritual, this is all together. We are doing a cosmetic. हम दिखावा करते हैं, हम एक्चुअल उसको फॉलो नहीं करते हैं. तो उसको करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये रिचुअल अगर है. हमने अभी इस ईयर ही अगर आप देखोगे हमने काफी सारे कुछ डिग्निटरीज को भी एक पार्टिसिपेट एक छोटा सा कार्यक्रम किया था. एंड वी हैव इनवाइटेड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इनटू दैट, in which we have made it as not a Shivratri, we have made it as a Bhaira Utsava. Yes. Because Shivratri for Kashmiri Pandits is a Bhaira Utsava. So we identified it in a different way rather than it's a Shiva or Parvati's marriage. So I request, whatever the knowledge you impart to your children, to your young people, give them the right knowledge and make them to understand what is the importance of it. Maybe as a father, maybe as a guardian, I need to read the book or to go to some teacher. But please guide them because that is going to continue. Don't give the false information. This is the reason, because of the false information, because वो एक the curiosity एक essence नहीं रहती, and the people say अरे ये same ही तो है, इसमें फर्क क्या है? हाँ, फर्क क्या है? Yes. So ये मेरी हाथ जोड़ के विनम्रता है कि प्लीज आप लोग यंग है, बच्चे हैं, सारे भी हैं, पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है. मुझे भी कल तक नॉलेज नहीं थी, मेरे माता पिता को कोई नॉलेज नहीं थी, ड्यू टू रीजंस एनीथिंग आई शुड नॉट गेट इनटू दैट. बट अगर आज हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, please try to learn it and impart a right knowledge about the culture. I was in one of the functions when senior most one association president was invited to confirm thoda sa knowledge about the culture. Finally
sorry, he started up and he landed up with Asmara Paise Thal Askat Batakon, Begas Esse Hunvertramen, because probably, sorry, I'm very sorry. तो मेरी यही गुजारिश है, प्लीज अच्छे से पढ़िए, जो भी रिचुअल है हमारे अच्छे रिचुअल्स हैं एंड उनका एसेंस है और धार्मिक एसेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. जो कॉस्मेटिक कर रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ. Somebody wrote on my I was surfing on Facebook, so somebody wrote a nice quote कि अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, नहीं तो कोई उन्हें अधर्म सिखा देगा. Right, absolutely. So that is very apt for our kids also. So we shall now wind up this live with a lot of solutions and conclusions. Thank you, sir, for joining me on this. And thank you very much. I'm obliged, and please. I'll send you the link also of that, and do Right. share it with everybody so that your thoughts and my views, a collective view is there. So every kid, every generation should watch this live, and they should actually appreciate, and they should now come up like Sheen, and let's decide to go back and join Kashmir again and live our culture full dignity with Sheen. Thank you very much. Thank you. May God bless you. Thank you so Thank you very much. Thank you. Namaskar. Namaskar. Namaskar.